Hi everyone, this is Akshaj.l. He has prepared for MBA exams, CAT, NMAT, and scored really good marks. His CAT was 96.78 percentile, NMAT was total 240 score, and he has done his graduation in BCom honors. So he'll be telling you, helping you with his preparation experience, what all you can do in your CAT 2024 journey. And today's discussion will be around MBA preparation, MBA exams. So, Akshaj, I would like you to introduce yourself and then we will start the interview with the questions which will help our students. Okay, sure. So apart from the what may have told about me, I have like hands-on practice on stock market, like trading in stock market and investment. Because I have keen interest in finance. So basically, I have developed my skills on that way only so that I can pursue my career in finance. Apart from that, I have done my graduation in BCom honors from Banaras Hindu University Mhm. while pursuing specialization in finance. So this is all about me. ओके अक्षज सो अक्षज आपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन थी वो लास्ट ईयर ही स्टार्ट की या आप उससे पहले भी आपने स्टार्ट कर दी थी? So now I have attempted last one more attempt of that. Like I have given it in 2022. So basically it was not like I have cleared my one of the sectional cut of that of VRC where I have achieved very really like I have scored only 30 percentile. So I was not able to convert any of the college that I want to convert. So I decided to attempt one more time and I have started my CAT preparation around in April. So basic, I was having the knowledge of 2022, where I have what are my weaknesses and what my strengths, and I decided to work on that only in 2023. Hmm. So beginning with in April, I worked on my weakness area, basically on VRC. I decided what I have to do, like reading newspaper articles, solving RCs, and doing para jumbles and all. That I haven't done in 2022. Okay. So I decided to do that. ओके सो स्पेशली ओवरऑल नॉट जस्ट वीआरसी, अगर मैं आपको पूछूं कि वीआरसी कौन डीएलआर में एग्जैक्टली आपके प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस था फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट, कि क्या आपने ऐसा एक्स्ट्रा किया? अगर कोई स्टूडेंट वीक है फॉर एग्जांपल, या अभी से शुरू कर रहा है, या आप सिर्फ 5 महीने बचे हैं, तो 5 मंथ्स वो स्टूडेंट को क्या क्या चीजें करे जो डेफिनेटली उसका एक एटलीस्ट 90 परसेंटाइल तो आ जाए, उसको एक टॉप 50 कॉलेज मिल जाए? ओके तो मैम बेसिकली उससे पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर वर्क देखना पड़ेगा कि हर पर्टिकुलर सेक्शन में उसकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस हैं and accordingly you have to decide to work. Like if I tell about myself, I has my strength in quant in arithmetic and geometry. And according to me, at that time I was thinking like doing any two particular sections. Like in quant there are five sections: arithmetic, algebra, geometry, number system, and modern math. So doing any two, like taking arith and algebra, one of them, and any other two uh, sections you can score well. So I decided to do only arithmetic and geometry. So it was good for me, and I scored something around 98 point something percentile in CAT in 2A section. Apart from that, in LRDI you have to understand whether you are able to solve the sets or not. And if you are not able to solve them, you have to go to like you can find various YouTube videos where you can find how to solve a LRDI set or you can get the practice set on daily basis. So I have done something around 4 to 5 sets on daily basis of LRDI, and apart from that, 20 to 30 questions of quant I do on daily basis. Correct. Got it. Okay. So how many months did you take in this second attempt to prepare for these CAT exam and MAT exam, right? आपने कितने almost आपको time लगा? कितने जल्दी आपने start कर दिया था? So now I have started something around April. So I decided to do quant fully, like I want to do algebra and all. But धीरे धीरे समझ में आया कि algebra नहीं कर सकता मैं. So I dropped it algebra on something around in June or July. And then I focused only on my two key areas, that was arithmetic and geometry. So I decided to give my 100% accuracy in exam. If any of the question that came from these two topics, I would be able to solve them. And my daily routine was like doing LRDI tests.
doing two RCs and some parallel questions. So it was my routine, and I think I started fully fledged on around June only. Okay, so 6 to 7 months you're saying is enough if somebody is consistent. अगर आप regular daily Yes, कुछ ma'am. 2 घंटे भी दे रहे हो तो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे बहुत कम टाइम है, ऐसा नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो लास्ट के 6 महीने भी Yes, enough ma'am. है। हाँ, पर कंसिस्टेंट नहीं हो तो मुझे लगता है 1 साल भी कम है, अगर कोई 1 साल पहले भी स्टार्ट कर रहा है, राइट। बेसिकली मैं ये है, लाइक इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, लाइक अगर आप सोचते हैं कि मैं 2 क्वेश्चन करूंगा और 4 क्वेश्चन करूंगा तो हो जाएगा, नहीं। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पर वर्क करना ही पड़ेगा आपको, और वो करेक्ट। डेली ही करना पड़ेगा। राइट, डेली बेसिस पे एनालिसिस, कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 2-3 दिन शायद नहीं भी पता चलेगा, पर डेली बेसिस सोचोगे तो एटलीस्ट बीच में पता चलता रहेगा कहाँ गलत कर रहे हैं, और वहां पे यू विल स्टार्ट वर्किंग। डेफिनेटली आई यस एग्री। मैम। यस, ठीक। इसके अलावा अच्छा, अपार्ट फ्रॉम योर स्कोर, सो फाइनली यू आर लाइक गोइंग टू एनएमआई, राइट। आपने ज्वाइन कर भी लिया, आपने यस स्टार्ट मैम। कर लिया, आपने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। बट इसका मतलब आपने कैट एग्जाम दिया था, आपने एनमैट एग्जाम दिया था, ऑफ कोर्स। बट इसके अलावा, आपके स्कोर के अलावा, वाज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच हेल्प इन द एडमिशन? कोई वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, एनी सर्टिफिकेट्स? So basically, ma'am, I am a fresher, but I have done my certificates. Like I have done my an online investment banking course that is offered by EduVillage. So I pursued the certificates that are on the way of my uh, career I want to pursue, like in the finance field only. So I have done my one of the NISM research analyst certificate that gives some extra points in CV. Basically, NISM certificate provides some extra points in CV. Apart from that, the work experience of my doing in family business. Like my father owns a small shop, so I have some of the experience there also, managing people and all. So that basically I was the fresher, so my interview revolved around only my uh, undergrad and like my domain basis only. सर, ये अंडरग्रेड है? Domain, like the field I want to pursue, like finance only. So ये most सो of the interviews were on that line only. ओके, एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर इंटरव्यू? लाइक 10 to 15 मिनट्स या उससे ज्यादा था? Now almost all were 10 to 15 minutes, but the bit from that takes the long interviews basically. Of all the people, they take long interviews, like they evaluate the profile. So हम्म। it was something around 30 to 35 minutes. Oh, so your was quite long. Okay, so apart Yes. from your say undergraduate subjects, apart from the field you want to pursue, क्या आपको जनरली जीके या ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए आज करंट अफेयर्स पे? Ma'am, basically, current affairs are something like they can be asked in any interview. So you have to brush up your current affair. Like if you are reading articles, go. If you are reading a newspaper article, read some 2 to 3 pages more. You can update yourself with current affairs, or do nothing. Just install some newspaper or magazines applications in your mobile phone and keep their notification on. So there also you can get the current affair what is going on. So it really helps. Like uh, basically in our time, in one of my interviews there was the Adani case, Adani Hindenburg case. I am remembering of 2022 interview. So there was the case after in January. So in my IMT Ghaziabad interview, the full interview was went on that particularly Adani Hindenburg case, because I was like interested in joining finance. So they kept my interview fully on that. And remembering this time, my uh, IMI New Delhi interview, it was also on particularly on finance field. So finance side. So like if you are updating yourself with current affairs, they really help according to me. Whether you for your domain is specific or general. गॉट इट, गॉट इट। ओके, डिड यू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यूज? मतलब इंटरव्यू जाने से पहले आपने उसकी भी अलग से कुछ प्रिपरेशन की थी? कहाँ से, कैसे की थी, इफ यस? Yes, I have prepared, ma'am. I have subscribed V Drive where I practice around 6 to 7 mock interviews with different. Uh, there are the mentors from different colleges. Basically, they are from IIMs, top IIMs and old IIMs also, baby IIMs also. So they have their experience of interview. So they help particularly in like getting you the ways that can be asked, how the interview will go, and what type of question will be asked.
Correct, correct. So I think I also always suggest, मतलब you correct me if I'm wrong. So I think जब भी आप मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे लगता है हमेशा किसी एक्सपर्ट या जिनको पता है, जिन्हें वो इंटरव्यूज खुद भी दे हैव गॉन थ्रू, उनके साथ ही करना चाहिए। बस कई बार लोगों को लगता है कि ठीक है हमारा परसेंटाइल स्कोर अच्छा आ गया है, फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं, मेरे फ्रेंड का भी इंटरव्यू कॉल है, मेरा भी है, ये मुझे पूछ ले, मैं उसको पूछ लूँ। पर आप एक दूसरे को उस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकते जो कि एक एक्सपर्ट जो सच में है ना उस इंटरव्यू में उसने देखा है कैसा, वो जो पूछ सकते। तो मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि शायद प्रेपरेशन फिर भी आप खुद कर लो, लाइक नो कैसे भी। पर इंटरव्यू की तैयारी होती है या मॉक्स होते हैं, इसमें तो थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, सही अच्छी क्वालिटी की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जनरली किसी के साथ भी नहीं हो सकती। सो आई थिंक इजंट इट, सो आई डोंट थिंक इंटरव्यूज यू कैन प्रैक्टिस विद एनीवन, स्पेशली लाइक विद फ्रेंड्स, अगर वो खुद खुद ने उन्होंने इतना इंटरव्यू कहीं नहीं दिया है इतना, इजंट इट, क्योंकि उनके क्वेश्चंस फिर भी लिमिटेड होंगे। Yes, ma'am, you are correct. Like doing the interview with the friend, it will be depend upon the knowledge of your friend he is there. तो बेसिकली अगर आपका फ्रेंड आपकी ही तरह है या फिर मान लीजिए आपसे बेटर है, लेकिन the types of question that can be framed in interview he can't know. Basically, the person who has experienced that interview or who is like mentoring students for more than 4 to 5 years or having vast experience, he can particularly he or she can help you like giving you the questions, asking you the questions of that type, making you in nervous situation. Basically, interviewer test your nervousness, how you can hold your nervousness during interview. राइट, ओवरऑल So पर्सनालिटी, आईक्यू, ईक्यू, yeah, कुछ है ना, ओवर वेल राउंडेड इंटरव्यू हुआ आपका भी, लाइक आई कैन सी एज यू टोल्ड मी, आपके yes, प्रोफाइल से पूछा, आपके अंडर ग्रेजुएशन से पूछा, जिस चीज में आपको आगे जॉब करना कर उसमें से पूछा, देन ये अडानी का एक मतलब इन वो जी के क्वेश्चन ही हो गए, करंट अफेयर का ही हो गया। तो बेसिकली यार yes, ma'am. इंटरव्यू जनरली इज वेल राउंडेड, भले ही किसी एरिया से कम क्वेश्चंस होंगे, बट थोड़ा बहुत हर एरिया से क्वेश्चंस होंगे ही होंगे फॉर Yes, श्योर। ma'am. ओके, नाउ इफ इन शॉर्ट, अगर आपको जो अभी स्टूडेंट्स जो कैट 2024 की प्रिपरेशन करना अब से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड लेट्स से दे आर एवरेज, मतलब वो बिल्कुल एवरेज नहीं कि बहुत ब्राइट है बहुत वीक है, कर सकते हैं 5 मंथ्स में, तो आप उनको क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या सजेस्ट करोगे चीजें जो कि 5 मंथ्स में डेफिनेटली गारंटी करेगा, या टू अ ग्रेट एक्सटेंट लाइक दे कैन बी अश्योर्ड कि हाँ ऐसे चलेंगे तो तैयारी पूरी तरह 100% हो जाएगी। So, ma'am, basically, I would recommend them first of all identify your syllabus, like know your syllabus first, कि क्या क्या syllabus है, and then segregate the syllabus on the basis of your strengths and weakness. Basically, identify the strengths in that particular syllabus. That okay, this topic is my strength. I can give uh, some less time to prepare it, and I would give more time to the my weakness. If in within a month your weaknesses are becoming your strength, or you are thinking that okay, I can manage them, then go ahead with them. Otherwise, leave them and only pursue your strength. Because according to me, giving a cat is more of like accuracy. So I would tell about myself. Now, I have attempted 8 questions in quant in basically all over my credit. 8 out of 8 were correct. So basically, I prepared only two domains that were arithmetic and geometry. So I encountered there were something around 10 questions out of two which were out of my mind. Like I was not knowing them. I was not able to solve them. So I just leave them and only focus on the particularly on the 8 questions which I can do and I solve them. ओके। Uh, Basically many times students conclude the wrong. Like they decided to attempt all the 24 questions हम्म। in 40 minutes. So you हम्म। are giving only around something you can say 2 minutes for a question, but it can't be do in a 2 minutes. Basically, cat questions are some questions are like that they can't be do in 2 minutes. So basically, you try to do only 10 to 12 questions. They are like most. I would say they will give you around if you are at 90% even accuracy is 90%. You will be achieving more than 95 percentile in quant according to me. And doing LRDI basically practice, just practice as many as steps you can do in a particular day. Take minimum target of 3 to 4 steps doing particularly in a day and of different types. Not like कि एक ही तरह के कर रहे हैं आप तो यही करते हैं. Do the different types of steps. For VRC, read articles, 2 RCs, around 2 to 3 RCs per day. Or get the length that came in CAT. Not like doing 100 word or 200 word articles. No. Do the length of the CAT and also practice VA, verbal ability, basically paragraphs, odd one out, everything. You in VRC you can't define the syllabus basically.
what can came. So it's good to solve. Right, right. So basically you're saying first step is identify strength and weakness। अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी तो क्लासेस जो अटेंड करे, सिलेबस कंप्लीट करो, साथ में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस भी जानो, वर्क मोर ऑन योर Yes, ma'am. वीकनेस। क्योंकि स्ट्रेंथ तो है, बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन भी दे दोगे तो स्ट्रेंथ तो ठीक है रहेंगे, पर मैक्सिमम टाइम शुड Yes, बी ma'am. वीकनेस। एक शेड्यूल बनाओ अकॉर्डिंगली, अगर आप जॉब कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग कब कब आप पढ़ाई कर सकते हो पहले तो वो। थर्ड, बेसिकली अगेन वर्क ऑन ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली कम टाइम, सब कुछ पढ़ने का पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, Yes, ma'am. अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, उस पर आप ज्यादा टाइम दोगे, राइट, ज्योमेट्री मैथ्स बाकी टॉपिक्स में दोगे। Yes, वी ma'am. आरसी हो गया तो अगेन आरसी 70% पोर्शन, ऑफकोर्स वीए इज इंपॉर्टेंट, पर अभी कोई स्टार्ट करे तो आरसी से स्टार्ट करेगा पहले, राइट, क्योंकि वीए फिर बीच Yes, बीच में ma'am. आप टाइम स्टार्ट करोगे। एंड सिमिलरली विद डीएलआर, कि आपके लिए अगेन डीआई ज्यादा इजी है कि एलआर ज्यादा इजी है, जो जो इजियर लगता है पहले उससे स्टार्ट करो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। एंड Yes, ऑफकोर्स ma'am. प्रैक्टिस है, हर सेक्शन में सारे क्वेश्चंस तो करने की जरूरत नहीं है, इवन टू गेट अ 99 और एनी परसेंटाइल, इवन लाइक ना ऑल इंडिया रैंक Yes, 1 ma'am. तो भी सारे क्वेश्चन सही करने की जरूरत तो है नहीं वैसे भी। तो इवन एक किसी को 90 Correct. या 95 परसेंटाइल लाना है तो 10 से 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्शन इज गुड इनफ। जब मॉक ले रहे हो तो आप यही देखो कि मतलब एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट, स्पीड इज नॉट, क्योंकि 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चन तो करने नहीं है, आपको 50% क्वेश्चन ही करने हैं। आप कर पा रहे हो तो गुड इनफ, लाइक सो एक्यूरेसी फोकस होनी Yes, चाहिए, ma'am. भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। सो आई थिंक राइट, ऑल इन ऑल दिस इज हाउ अ स्टूडेंट शुड अप्रोच देयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। Yes, ma'am. Correct. Right. Okay. Thank you so much, Akshaj, and all the best for your NMIMS journey. Stay in touch. And कुछ भी अगर स्टूडेंट्स आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। And अगर आपको अक्षर से कोई क्वेश्चन है तो भी वो मैं पूछ के आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो Yes, sure, ma'am. मच, या बाय, हैव अ नाइस Thank डे। you, ma'am.